गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल अलायंस जो है अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी वो ऑफिशियली लॉन्च किया गया है G20 लीडर्स समिट में, रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका है कि एक्सेलरेट किए जाएं एफर्ट्स टुवर्ड्स इरेडिकेशन ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी ग्लोबली। तो पहले तो हम डेफिनेशन समझते हैं। FAO जो है वो कहता है कि हंगर क्या है, फूड डेप्रीवेशन या फिर अंडर नरिशमेंट। और इंडिया का स्टेटस ये है कि जो अ, हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट निकलती है 2024 की, अगर हम देखें तो इंडिया का उसमें रैंक जो है वो 105th आया है 127 कंट्रीज़ में। ठीक है, तो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी जो है वो आपका 2030 का जो एजेंडा है SDGs का, उसके ही जो है वो मद्देनज़र बनाया गया है, ताकि 2030 तक पॉवर्टी को, हंगर को और जो है एंड किया जा सके और फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। ठीक है, प्रोजेक्शंस कह रहे हैं कि 622 मिलियन पीपल जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के जो है वो नीचे रहते हैं। ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटीज़, उससे और ज़्यादा जो है प्रोग्रेस जो है वीकन हुई है। इसलिए जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने फोकस किया है कि हम इस अलायंस के थ्रू कैश ट्रांसफर्स, स्कूल मील्स और फार्मर्स को सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, की ऑब्जेक्टिव इसका रहेगा कि जितने भी नेशंस हैं FAO हंगर मैप पर, उन पर जो है फोकस रखा जाए। ठीक है, और इवन जो ऐसा नहीं है कि क्योंकि G20 में लॉन्च किया तो सिर्फ G20 के ही मेंबर्स बनेंगे, इसके नॉन G20 मेंबर्स भी जो है वो इस अलायंस का मेंबर बन सकते हैं। कहा जा रहा है कि 500 मिलियन लोगों तक पहुंचा जाएगा इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स के थ्रू, और स्कूल मील्स दी जाएंगी 150 मिलियन चिल्ड्रन को हाई हंगर रीजन्स में। ठीक है, इवन जो मल्टीलैटरल बैंक्स हैं उनके उनके फाइनेंस को भी मोबिलाइज किया जाएगा, और लगभग कहा जा रहा है 2 से 3 मिलियन डॉलर्स जो है इसका हर साल का खर्चा आएगा। हेडक्वार्टर्स या तो ब्रासीलिया में होगा या फिर किसी और ग्लोबल साउथ कंट्री में इसका हेडक्वार्टर डाला जाएगा। और इसके अगर हम बाकी के फीचर्स देखें तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर की जाएंगी अमंग मेंबर्स, और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ या फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो भी इसमें दिया जाएगा नेशनल हंगर और पॉवर्टी एडिकेशन पॉलिसीज़ को लेकर। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, अरेस्ट वारंट अगेंस्ट नेतन्याहू। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट्स इशू किए हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट और एक हमास लीडर के अगेंस्ट फॉर अलेज्ड वॉर क्राइम्स। तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या? ये एक परमानेंट कोर्ट है जो प्रोसिक्यूट करता है सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स को जो कि इंडिविजुअल्स कमिट करते हैं। तो इसमें जो है इसको बनाया गया था ताकि ग्लोबल इम्प्यूनिटी जो है को फाइट किया जा सके और जस्टिस लाया जा सके क्रिमिनल्स के अगेंस्ट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो द हेग में है, नीदरलैंड्स में, और ये 2002 से फंक्शनल हुआ है। और जिन जिन कंट्रीज़ ने रोम स्टैच्यूट साइन किया है और उन्होंने उसको रेटिफाई भी किया है, वो सब इसकी मेंबर हैं। इंडिया, चाइना, इराक, नॉर्थ कोरिया, टर्की ने कभी रोम स्टैच्यूट को साइन ही नहीं किया, और US, रशिया, इसराइल और सीरिया ने साइन तो किया लेकिन इसको रेटिफाई नहीं किया। अब इसकी जो है वो कैसे ये ICC फंक्शन कैसे करता है? कोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट करता है थ्रू ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर, और उसके लिए 18 जजेस हैं। प्री ट्रायल, ट्रायल और एपेलेट बेंचेस जो हैं वो ICC में आते हैं, और एक प्रोसिक्यूटर जो है ओपन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन अगर उसे लगता है कि केस जो है वो किसी मेंबर कंट्री ने अपनी खुद की टेरिटरी का ही उसको ट्रांसफ़र किया है, या फिर कभी UN सिक्योरिटी काउंसिल रेफ़र करे ऐसा कोई केस, या फिर प्रोसिक्यूटर कभी कभी प्रोप्रायो मोटो मतलब ऑन हिज ओन भी जो है वो केस जो है वो टेकअप कर सकता है। नॉन मेंबर स्टेट्स के अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है अगर क्राइम्स वो नॉन मेंबर कंट्री ने किसी मेंबर स्टेट में किए हैं, या फिर नॉन मेंबर जो है वो कहती हैं कि हम इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन मानने को तैयार हैं, या फिर कभी सिक्योरिटी काउंसिल अगर ऑथराइज करे तो। ठीक है, ICC ने अक्यूज़ किया है कि जो नेतन्याहू और गैलेंट हैं जो कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने वॉर क्राइम जो है वो स्टारवेशन का और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है वो किए हैं, इंक्लूडिंग मर्डर, परसिक्यूशन और अदर इनह्यूमन एक्ट्स। ठीक है, और नेतन्याहू और गैलेंट जो है वो अब कहीं भी अगर ICC के किसी भी मेंबर स्टेट में ट्रैवल करते हैं तो उन कंट्रीज़ को वो ऑब्लिगेटेड होंगी, वो कंट्रीज़, कि वो इन लीडर्स को अरेस्ट करके एक्स्ट्राडिट करें द हेग में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो है वो
आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार देने वाले हैं 82 यंग आर्टिस्ट को। तो ये जो अवार्ड है, ये संगीत नाटक अकेडमी ने भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रखा 2006 में। हर साल दिया जाता है आउटस्टैंडिंग यंग आर्टिस्ट को जिन्होंने फील्ड ऑफ म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, फोक और ट्राइबल आर्ट्स और पपेट्री में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। 25,000 का जो है इसमें पर्स मनी दी जाती है। और अगर हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में समझें तो वो एक शहनाई म्यूजिशियन थे जो इंडिया की फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन थी 1950 में, उन्होंने भी उस टाइम पर शहनाई जो है वो बजाई थी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोल्ड वेव। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो है नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ ने वार्निंग दी है तेलंगाना और 16 अदर स्टेट्स को अबाउट कोल्ड वेव कंडीशंस। तो कोल्ड वेव क्या है? अनयूजुअल वेदर अक्रेंसेस जो कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स की वजह से जो है वो नियर सरफेस एटमॉस्फेयर में होते हैं और ये कई दिनों से कई हफ्तों तक रह सकता है। ओके, प्लेन्स में हम कैसे कब मानते हैं कि जो है कोल्ड वेव है? जब मिनिमम टेम्परेचर लेस दैन या इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस हो। हिल्स में यही जो है अगर 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो हम उसको कोल्ड वेव मानते हैं। ठीक है, और एडवाइजरी में कहा जाता है कि अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो जाए कोल्ड का तो सिवियर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं इंक्लूडिंग हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्ट बाइट। हाइपोथर्मिया में मतलब बॉडी ठंडी होने लगती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये टॉपिक आपके जो है इन्वायरमेंट के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की 2025 की जो रिपोर्ट है वो जो है रिलीज़ की गई यूएन की क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बाकू में, उसमें। ओके, तो तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया जाता है थिंक टैंक्स जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा। ये प्रोग्रेस को ट्रैक करता है वर्ल्ड के लार्जेस्ट एमिटर्स की इन टर्म्स ऑफ एमिशंस, रिन्यूएबल्स और क्लाइमेट पॉलिसी। इसको सबसे पहली बार 2005 में पब्लिश किया गया था। और अगर हम इस बार की रिपोर्ट देखें तो इंडिया जो है उसका रैंक जो है 10th आया है लिस्ट ऑफ 60 कंट्रीज़ में। टोटल 63 कंट्रीज़ अलॉन्ग विद यूरोपियन यूनियन, ये कंट्रीज़ जो है इनको इसलिए असेस किया जा रहा है क्योंकि 90% ऑफ ग्लोबल एमिशंस यही कंट्री कर रही हैं। ओके, तो इसमें इंडिया की तारीफ़ की गई है कि इंडिया ने कंसिडरेबल प्रोग्रेस दिखाई है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, खासकर जो रूफ टॉप सोलर स्कीम है उसके कंटेक्स्ट में। ठीक है, इंडिया और यूके ऐसी दो G20 कंट्रीज़ हैं जो हाई परफॉर्मर्स रही हैं CCPI में। लेकिन ऑफ कोर्स जो सबसे ज़्यादा रैंक है वो तो डेनमार्क का आया है, वो टॉप स्पॉट पर आया है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक जो है वो लॉन्च किया है। तो जो कि इनोवेशन को प्रोपेल करेगा, बूस्ट करेगा कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को। ये इनिशिएटिव प्रोवाइड कर रहा है रिसर्चर्स को, स्टार्टअप्स को और डेवलपर्स को एक्सेस टू हाई क्वालिटी डाइवर्स डेटा सेट्स ताकि वो स्केलेबल और इंक्लूसिव AI सॉल्यूशंस बना सके। एनहेंस करेगा ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रू रियल टाइम एनालिटिक्स ऑफ सैटेलाइट, ड्रोन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डेटा। तो कंट्री का गोल है कि यूटिलाइज किया जाए AI को प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में। ओके, AI तो आपको पता है एक फील्ड ऑफ साइंस है जो कंसर्न है कंप्यूटर्स को और मशीन्स को बिल्ड करने के लिए ताकि वो रीजन, लर्न और एक्ट कर सके इस तरह से जैसे एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होस्ट करने लगा है इंटरनेशनल ग्लोबल अलायंस की फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड है वो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो इसको होस्ट करेंगे इस कॉन्फ्रेंस को, और ऑफिशियल लॉन्च किया जाएगा UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 का। ओके, तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस क्या है पहले तो हम ये समझते हैं। तो ये एक तरह से नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशन है और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट NGOs है जो 1895 में फाउंड किया गया था। एपेक्स बॉडी है ये, जितनी भी रिप्रेजेंट कोऑपरेटिव्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। लगभग 3 मिलियन जो है कोऑपरेटिव्स वर्ल्ड वाइड इसमें रिप्रेजेंट होती हैं। इसके जो मेंबर्स हैं वो इंटरनेशनल और नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस दोनों हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से हो।
306 ऑर्गेनाइजेशंस 105 कंट्रीज में जो है वो मेंबर्स हैं आईसीए की। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मीर कैट टेलीस्कोप। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स ने मीर कैट रेडियो टेलीस्कोप को एम्प्लॉय किया है ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके जायंट रेडियो गैलेक्सीज को इन द फील्ड ऑफ कॉस्मोलॉजिकल एवोल्यूशन सर्वे। तो मीर कैट रेडियो टेलीस्कोप कनेक्टेड अरे ऑफ रेडियो टेलीस्कोप्स हैं जो नदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। ओरिजिनली इसको हम कारू अरे टेलीस्कोप कहते थे। ओके, और ये रेडियो सिग्नल्स का यूज़ करके स्पेस में जो है वो एवोल्यूशन जो है यूनिवर्स का उसको स्टडी कर रहा है, और जो भी यूनिवर्स में है उसको सबको स्टडी कर रहा है। करंटली अगर हम माने तो ये मोस्ट पावरफुल रेडियो इंटरफेरोमीटर जो है एट सेंटीमीटर वेवलेंथ ये एग्जिस्ट करता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Global Alliance Against Hunger and Poverty. This topic is important for your social issues and international relations topic. So Global Alliance Against Hunger and Poverty was officially launched during the G20 Leaders Summit at Rio de Janeiro, Brazil. And its primary objective is to accelerate efforts towards the eradication of hunger and poverty globally while promoting the achievement of sustainable development goals. Okay. So what is hunger? We need to understand that Food and Agriculture Organization defines hunger as food deprivation or undernourishment. Okay. So India is ranked 105th among the 127 countries in the Global Hunger Index report, which means serious level of hunger. Okay. So what is this alliance then? So 2030 Agenda for Sustainable Development, or the SDG goals, which were adopted in 2015 by all UN member states, they talk about ending poverty, hunger, and ensuring food security by 2030. So projections are also indicating that 622 million people will live below the extreme poverty line by 2030. Global conflicts, climate change, and inequalities are further weakening this progress towards SDGs. So that's why this global alliance has been launched against hunger and poverty. This initiative is going to focus on cash transfers, school meals, and support for farmers. And the agenda is to align with the SDGs. And the key objective is to remove all nations from the FAO hunger map. Okay. So just because it was launched during the G20 summit does not mean that it will be available only to G20 countries. Since 2024 July, this has been made available to all non-G20 countries as well. So what are the commitments here? The commitment is to reach about 500 million people through income support programs by 2030, provide school meals to at least 150 million children in high hunger regions, leverage the finance from multilateral banks for anti-poverty initiatives. So this is being estimated that about $2 to $3 million annually would be required for this alliance functioning. And it is expected that headquarters of this alliance will be in Brasilia or any other global south country. Apart from that, best practices among members will be shared. Technical expertise and financial support will be provided for national hunger and poverty eradication policies as well. Okay. So the next topic is arrest warrant against Netanyahu. This topic is important for your international relations. So ICC has recently issued arrest warrants for the Israeli Prime Minister, former defense minister, and Hamas leader for alleged war crimes and crimes against humanity. So first of all, we need to understand what is International Criminal Court. So it is a permanent court to prosecute serious international crimes which have been committed by individuals. So this court was established to fight global impunity and bring to justice criminals under the international law. So its headquarters is located in The Hague, that is in the Netherlands. And before the ICC became functional in 2002, its founding treaty was adopted by the UN General Assembly in 1998 in Rome. Therefore, it was made into Rome Statute. To become a member of ICC or state party to the Rome Statute, countries have to sign that statute and ratify it under their respective legislatures. Of course, India, China, Iraq, North Korea, and Turkey never signed this statute, but US, Russia, Israel, and Syria, they signed it, but they did not ratify it. Okay. So how does the ICC function? So the court carries out its investigation through the office of the prosecutor, and it has 18 judges. There are pre-trial, trial, and appellate benches in the ICC as well. So how does it investigate? The prosecutor can open an investigation in three ways. First, when a case is referred by a member country in its own territory,
It's a simple matter. Then when a case is referred by the UN Security Council to the prosecutor, okay, or when the prosecutor decides to take action or to take up investigation on his own, non-members can also be investigated. How? If the crimes have been perpetrated by these non-members in a member country, okay, or if the non-members accept the court's jurisdiction, or sometimes when the Security Council authorizes it. So ICC is accusing Netanyahu and Gallant for the war crime of starvation and crimes against humanity, including murder, persecution, and other inhuman acts. So if what will happen? If Netanyahu and Gallant travel to any ICC member state, those governments will be obliged to arrest and extradite them to the Hague. Okay. So the next topic is Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar. This topic is important for your art and culture section. So Union Minister for Culture and Tourism will confer the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar for the years 2022 and 2023 to 82 young artists in a special ceremony. Okay, this award was instituted by the Sangeet Natak Academy in the name of Bharat Ratna Ustad Bismillah Khan in the year 2006. This is given annually to outstanding young artists in the field of music, dance, drama, folk, tribal arts, and puppetry. So this award carries a purse money of 25,000 rupees. So Ustad Bismillah Khan was a famous Shehnai musician who played Shehnai at the first Republic Day celebration of India in 1950. Okay. So the next topic is cold wave. This topic is important for your environment section. So recently, National Program on Climate Change and Human Health under the Ministry of Health and Family Welfare has issued an advisory for Telangana and 16 other states and UTs about cold wave conditions. Cold waves are unusual weather occurrences which are caused by extremely low temperatures in the near surface atmosphere, and their duration can range from several days to several weeks based upon the geography and climatic conditions of the region. For plains, the minimum temperature has to be less than or equal to 10 degrees Celsius. For hilly regions, the minimum temperature has to be less than or equal to 0 degrees Celsius to be declared as a cold wave condition. So the advisory also cautions that prolonged exposure to cold can cause severe health issues, including hypothermia and frostbite. Okay. So the next topic is Climate Change Performance Index. This topic is important for your environment section. So recently, Climate Change Performance Index report for the year 2025 has been released at the annual UN Climate Conference in Baku. So this is published by think tanks called German Watch, New Climate Institute, and Climate Action Network International. So it tracks the progress of the world's largest emitters in terms of emissions, renewables, and climate policy. And it was first published in the year 2005. India ranked 10th on a list of over 60 countries assessed for efforts to fight climate change. 63 countries along with European Union assessed in the CCPI are responsible for 90% of the global emissions. According to CCPI experts, over the past year, India has made considerable progress in renewable energy policy, particularly with large-scale solar projects and launch of the rooftop solar scheme. In this report, it is also said that India and UK are the only two G20 countries among the high performers in this index. Of course, Denmark ranks at the top, but technically it is at the fourth place, okay, followed by Netherlands and UK. So the next topic is Artificial Intelligence Data Bank. This topic is important for your science and tech section. So recently, Ministry of Science and Technology has launched this India's first artificial intelligence data bank, which is aimed to propel innovation and boost the national security of our country. So this initiative will provide researchers, startups, and developers access to high quality, diverse data sets, which is essential for creating scalable and inclusive AI solutions. So this will enhance national security through real-time analytics of satellite, drone, and Internet of Things data. And it will also align with the country's goal to utilize AI for predictive analytics in disaster management and cybersecurity. Okay, so what is artificial intelligence? So it is a field of science which is concerned with building concerned with building computers and machines that can reason, learn, and act in such a way that would normally require human intelligence. Okay. So the next topic is International Cooperative Alliance. This topic is important for your uh, social issues. So India is all set to host the global conference of the International Cooperative Alliance for the first time. So IFCO is going to host this
General Assembly and Global Cooperative Conference. So this will mark the official launch of the UN International Year of Cooperatives 2025 as well. Okay. So what is ICA? ICA is a non-profit international association which unites, represents and serves the cooperatives worldwide. It was founded in 1895 and it is one of the oldest NGOs of the world, and it can be considered as one of the largest in terms of the number of people represented, with almost 1 billion cooperative members on the planet. Okay, it is the apex body which represents cooperatives, and these are estimated to be around 3 million in number worldwide. Okay, ICA's members are international and national cooperative organizations from all sectors of the economy, and more than 306 organizations from about 105 countries are members of the ICA. Okay, so the next topic is Meerkat telescope. This topic is important for your science and tech section. So an international team of astronomers have employed the Meerkat radio telescope to investigate giant radio galaxies in the field of cosmological evolution survey. So Meerkat is a connected array of radio telescopes located in the Northern Cape province of South Africa. It was originally known as the Karoo Array telescope, which would consist of 20 receptors, but the South African government increased the budget to allow for the building of 64 receptors. So that's why it has been renamed to as Meerkat, that is more of cat. So it uses radio signals from space to study the evolution of the universe and everything it contains. And currently, it is the most powerful radio interferometer at centimeter wavelengths, which comprises of 64 dishes, each 13.5 meters in diameter, with a maximum separation of 8 kilometers. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.